सो बॉयज वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं हिटमैन 3। तो यार लास्ट वीडियो में हम लोग दुबई गए थे और वहाँ पे आके दो बंदों को हमने ठोका था बड़े पप्पू तरीके से। तो यार आज की वीडियो में हम लोगों ने आंटी को ठोकना है। तो यार हम लोग जा रहे हैं इंग्लैंड और अब देखो वहाँ पे क्या क्या हम लोग नई नई स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं यार इनको मारने के लिए। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। Thornbridge Manor, the Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. तो जो भैया हमारा जो टारगेट है वो अंदर है इस हाउस के अंदर। वो भाई बड़ा सेक्सी हाउस है। तो यार हम लोगों को ना वो आंटी को ठोकना है किसी भी तरीके से। और अब हम लोग देखते हैं पॉसिबल एंट्रीज क्या हो सकती हैं। तो एलिमिनेट एलेक्सा कार्लाइल और फाइंड द केस फाइल। ये कौन है? प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर FBI। Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madame Carlyle. ओए भाई यही तरीका है, मतलब इसके ज़रिए ना हम लोग ना उसके करीब जा सकते हैं और उसको आराम से ना मार सकते हैं। मतलब तो यार फिर मैं एक काम करता हूँ, इसकी ना डिस्गाइज ले लेता हूँ। तो अब यार ये सबके सामने तो मैं उसके कपड़े नहीं उतार सकता। तो भाई मैं ये ना ज़रा ट्रेसपैसिंग एरिया की तरफ आ गया हूँ। अब मैं सबके सामने तो यार इसके कपड़े नहीं उतार सकता क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। वो सामने एक बंदा है, तो मुझे ना कुछ अपना सुनसान जगह ढूंढनी पड़ेगी ये सब करने के लिए। यहाँ पर भी 2 बंदे हैं। घर के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ मैं। वो अबे ये मतलब घर है या किला है पूरा? यहाँ पे काफ़ी सारी गड्डी वड्डी भी खड़ी हुई है। पुलिस हर जगह देखो, तुम लोग देख सकते हो पुलिस है। मतलब यहाँ पे कोई ना क्राइम व्राइम हुआ हुआ है और फिर अपने फ्यूनरल भी है। तो मतलब बड़े टाइट पप्पू सीन चल रहे हैं यहाँ पर। ओके यार एक मिनट रुको यार, पहले सेटिंग की थोड़ा चेंज कर लूँ। ओके अब ज़रा यार ये थोड़ा सा जो ऑप्शन है ना ये वाला, वो मुझे ज़रा अच्छा दिख रहा है। इसकी की दूसरी हुई भी थी। अच्छा मतलब यार ये तो घर के अंदर आ रहा है फ्रंट डोर से, तो मैं अंदर जा नहीं सकता। तो मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा अंदर जाने का। Oh, by the way, I told Kate about those texts. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but thank me. वही तो रास्ता होगा अंदर जाने का यार। We had a really good talk about it, actually. Oh, what did I tell you? ठीक है। She's a sensible woman. पाइप्स, अबे हाँ पाइप पे चढ़ सकते हैं ना हम लोग। I know. ये मतलब यार ये बाल्टी शाल्टी वगैरह सब रखी हुई है, बेलचे रखे हुए हैं। किसी का सर्वर फोड़ने के लिए पूरा सामान रखा। ओके अब मैं ऊपर चढ़ गया हूँ। ये टाइट सीन है भाई, मून वॉक कर रहा है ऑन द एज ऑफ द वॉल। ओके क्लाइम थ्रू द विंडो। ओके भाई अब मैं आ गया हूँ घर में। वो रही मेरी टारगेट, ऊपर जा रही है, ऊपर टहल रही है ये मज़े से। इसको पता ही नहीं हम लोग इसी ठोकने आए। अच्छा यार यहाँ पे लैपटॉप है जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये क्या कुत्ते की पेंटिंग भी है, पता नहीं क्या है इसके पीछे। पहले लैपटॉप चेक करते हैं। सेव भी हो गया मेरा। रेबेकास लैपटॉप। और फिर से मैं ये बताया हुआ कि वो कॉन्फ्रेंस कॉल में थी अराउंड 10 AM लास्ट नाइट, 10 PM लास्ट नाइट। ओके आई डोंट नो भाई इसका क्या मतलब है। अच्छा ये क्या है? ओए सीक्रेट एंट्रेंस, वाह सही है क्या भाई? पीप ताका झाकी भी कर सकते हैं। ओए ओए ओए
ये बाथरूम में हम लोग झांक सकते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ के लोग ना एक दूसरे को झांकते हुए देखते हैं नहाते हुए। यहाँ की अपनी बच्ची लड़कियों को उतारते हैं नहाते हुए। What the hell यार, ठीक है। No, I need it immediately. Yes, I'll hold. अब ये तो हिटमैन का भाई लग रहा है। इसका जुड़वा भाई यहाँ पे क्या कर रहा Yes, I'm still here. है? वाह It भाई doesn't वाह, exist. What do you mean it doesn't exist? ये सही सीन है। अच्छा ये क्या स्विच है यहाँ पर? कोई आ रहा, इसको पहले जाने दो। अच्छा खुद ही बंद हो गया, ये सेक्सी सीन है। अच्छा मुझे करना ये है कि ना किसी के यार मुझे ना कॉस्ट्यूम लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जब मैं कॉस्ट्यूम ले लूँगा ना तो फिर घर में आराम से घूम फिर सकता हूँ मैं। तो सोच रहा हूँ मैं इसके भाई की ले लूँ मैं, लेकिन ये कि ये बंदा घूम रहा है, पहले इसको जाने दो। हाँ ये गया, पहले इसको टपकाते हैं, ये ना फिर पीछे से हमें देख लेगा। तो गया था हमसे, अब इसकी बारी है। ठीक है, डन हो गया। इसके कपड़े पहनो। ऑल राइट, चलो अब इनको काम करते हैं, डम कर देते हैं। ओके तो भाई मैंने इन दोनों को ना वहाँ पे उसमें डाल दिया, संदूक में। अब ज़रा पहले चेक करते हैं यार ये लैपटॉप पे क्या देख रहा था, गंदी फाशी चीज़ें तो नहीं देख रहा था। This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. ओके अच्छा प्राइवेट, ओए सामने से आ रही है, ठोक दूं क्या उसको यहीं पर ही? मतलब यार अभी यहाँ पर ठोकना सही नहीं है, मतलब सामने है, मैं अभी इसको मार के यहाँ से भाग सकता हूँ, लेकिन यार वो मिशन की वो बात नहीं आएगी जो हमें चाहिए। तो अभी ये ऊपर ही आ रही है अपने ख़ास सिक्योरिटी में, उसको वहाँ पे जाने देते हैं। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, हमें उसकी कॉस्ट्यूम चाहिए, उसके ज़रिए जो है ना हम इसके बहुत करीब पहुँच सकते हैं, फिर वहाँ पे फिर इसको मारेंगे हम। ये मैं देखूँ ताड़ा, ये बटलर मुझे सस्पिशियस निगाहों से देख रहा है। ओके तो भाई ये रहा वो इन्वेस्टिगेटर, पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे। डिस्गाइज योर सेल्फ एज प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। मैं सबके अभी भी यार दो बंदे हैं यहाँ पर, मुझे वेट करना पड़ेगा ये कहीं बाहर चला जाए। ये कौन सी जगह है? गार्डन वार्डन बने हुए हैं, ये क्या न्यूज़ मिशन स्टोरी रिवील। Ethel looked everywhere. Oh, you've got to be kidding me. No power, no portrait. Oh, Madame Carlyle will be furious. So, Madame Carlyle wants a picture taken. If you were to assist with the missing fuse, I'm sure the portrait would be one for the ages. Rias, is she expecting ठीक है, मतलब दूसरा चांस जो वो ये है कि हम लोग फोटोग्राफर बन जाएं और फिर उसकी फ़ोटो वगैरह ले लें, लेकिन हमें कुछ फ्यूज़ वगैरह जो है वो सब ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर पर ही रहता हूँ, पहले इसको देखते हैं मैंने, लेकिन पहले थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे व्यू वगैरह कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ है ख़ास चीज़ और कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह। ये क्या है? क्रोबार, यू आर मिसिंग द नेसेसरी आइटम टू कंप्लीट द सेक्शन। कीज़ भी नहीं है, ना लॉक पे के हमारे पास, ना क्रोबार है, तो हम लोग ये रास्ता तो नहीं खोल सकते हम लोग। I don't believe for a second Zachary committed suicide. वहाँ पे We'd क्या only है? just run ये through क्या his है? plan for spring seedling yesterday. शेयर्स, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। He was upset believing his sister was dead. यहाँ पे तो I'd say गार्डनर्स worried वगैरह खड़े about हैं। how ये things क्या will be है? handled with ओए Gregory and क्रोबार Emma मिल गया taking मुझे, over. ज़बरदस्त। I said to let him stay. Yeah. But क्रोबार सबके सामने पकड़ता हुआ जाऊँगा, अजीब सा लगूंगा। सीन ये है कि मैं खोलता हूँ उसको, लेकिन पहले देखता हूँ वो कुत्ता बाहर आया कि नहीं आया। नहीं, वो अभी भी अंदर ही घूम रहा है। एक मिनट, बाहर आ रहा। ओह वो बाहर आ गया। मैं काम करता हूँ, इसको सबसे पहले डिस्गाइज कर लेता हूँ, ताकि ना मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वगैरह जो है ना वो कम हो जाए। What a marriage. Splendid dynamics between the two. Loaded कॉइन फेंकना with पड़ेगा। conflict.
unsaid fears in his eyes. What? जा के पकड़। What was that noise? सबसे पहले सेव कर लेते हैं भाई। ओके मैंने सेव कर लिया। अब मैं जो है कर सकता हूँ, लेकिन यार Yes, you are the man. ये तरीका मुझे यहाँ पे भी ठीक नहीं लग What a रहा। marriage. काफी सारे बंदे Splendid हैं। dynamics between the two. Loaded with conflict. Unsaid fears in his eyes. दोबारा फेंक के देखते हैं। I could just stare all day. Hey? What was that noise? इसको जाने तो मैंने थोड़ा दूर फेंका है ना, अब इधर दूर, क्योंकि सामने जो है सामने वो डस्टबिन भी है। Thumbs up, mate. If you're dressed like a Detective 47, you might as well act the detective. I suggest you go talk to the butler. ऑलराइट भाई, सीन हो गया, ज़बरदस्त सीन हो गया। ओके दो कॉइन, जो कॉइन मैंने फेंके थे मुझे वापस मिल गए। अच्छा, टॉक टू द बटलर, ठीक है। उससे पहले मैं काम करता हूँ, पहले यहाँ पे ज़रा चेक भी करता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्रोबार आ गया ना। अब मैं यहाँ का जो दरवाज़ा है वो खोल के चेक कर सकता हूँ। तो पहले चेक करते हैं यहाँ पे है क्या। सेव भी कर लिया। यहाँ पे क्या है? ओके कोई मुझे सस्पिशियस निगाहों से देख रहा है। खैर मैं यहाँ Broken lab equipment. It looks like it was recently used, though. ये क्या चीज़ है? I will never again meet someone like that. ये फूल क्या है? Poisonous flowers. Anyway भाई, यहाँ पे कोई खास चीज़ तो नहीं मिली। अच्छा मैं जाता हूँ बटलर से जाके बात करता हूँ। Mr. Whitmer, are you ready to inspect the crime scene now? ओके भाई, ये क्या कह रहा है? क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करना Very है। well. If you'll follow me, sir. अच्छा, फॉलो मिस्टर फ्रेंडली। इनके I साथ feel मिलके मुझे obliged to क्राइम point सीन out चेक करना that पड़ेगा। current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with me if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. Okay, अब हमें यहाँ A पे locked room crime murder scene mystery check करना है। 47. I trust you'll get to the bottom of this. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? Okay. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. ओके, और यहाँ पे क्या क्या है? लैपटॉप है, लैपटॉप भी चेक करके देखते हैं।
Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Anything else? ये क्या है? Zachary's suicide note. Also, Suicidal note. a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. अच्छा, और कुछ है यहाँ पर? और कोई काम की चीज़? ये क्या है? बुक. Oh, A hidden. hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. ओके, अच्छा, मुझे जाके बटलर से बात करनी है कि हम लोगों ने जो जो इन्वेस्टिगेट करा है उससे सब बताना है. अब सीन ये है कि यार यहाँ पे इस घर में ना कोई शक की निगाह से कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ. मतलब भाई फुल एकदम शश के आया है, कोई मुझे ताड़ नहीं सकता. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish the time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. I've just remembered I went for a stroll behind the greenhouse I do not last have night. an alibi. Maybe that's where it is. I was alone in my office My lost button. at the time of death. One you couldn't find at the Here's the graveyard. material that I prepared for Good you. idea for you to go and look for It's a list of the possible suspects and Now? their quarters. It's a good idea. Hopefully that Yes. will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. This is very useful information, 47. ओके, तो भाई ये जो पॉसिबल सस्पेक्ट्स हैं, हमें इनसे बात करनी है, इनसे पूछना है कि भाई आप लोग कहाँ थे जब मर्डर हुआ था, और फिर उसके बाद हमें हर एक का रूम चेक करना पड़ेगा. वाह, तो मतलब फुल एकदम क्राइम सीन हमें पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद जाके हम लोग मैडम कार्लाइल से मिल सकते हैं. तो चलो पहले एक से बात करते हैं. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Boredom. I fear I may not survive an entire weekend in this shithole. Perhaps a brisk walk in the garden would एक do तो you यार good. वे I बात कर said भाई speed मुझसे, up मैं तुझसे time, बात करने not आया my हूँ. passing. Now just go away, will you? Of course, sir. I'll come back later. How very kind of you, dear Mr. Fernsby. I hope to see you soon. Creepy old git. Patrick Carlyle, Okay. can you tell me where you were yesterday भाई ये evening? तो आउटलास्ट 2 की एली लग रही है. It's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think... Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. ओके भाई, तो इसने कहा कि बटलर मार सकता है. ठीक है, और लोगों से भी पूछताछ करनी है मुझे. यहाँ पे और लोग हैं, अंकल बैठे हैं, इनसे पूछते हैं. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective.
Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Is that all? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Anything else you... Anything else you'd like to tell me? Nothing, really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Okay. अच्छा ये इसकी शायद बीवी है. Emma Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. ओके भाई काफी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है यार. अभी और भी लोग हैं जिनसे हमें पूछना है. Something's off. ये है. Pruitt got word his motion was rejected. We all signed the bloody thing 4 days ago. So I got hold of the officer. He says it was finalized, but then how can it be withdrawn? Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room. And सही है हमने इसका लैपटॉप देखा था. I don't know about ये Emma. मीटिंग में थी. She did act तो a ये bit तो सस्पेक्ट नहीं हो strange. सकती. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is there anything else you want to ask? Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Is that everything, Mr. Whitmer? I do have a lot to see to. ओके तो भाई दो बंदे हैं, दो बंदों ने हमें बोला है कि जो बटलर है वो कुछ सस्पिशियस था. इसने तो भाई उसको जाते हुए भी देखा था, तो बटलर शायद हमारा टारगेट हो सकता है. अच्छा अब हमारे पास क्या क्या है, हमने सबसे बात कर ली है.
हो गया है, ये काम हमारा हो गया है। अच्छा अब हमें क्या करना है, क्लूज ढूंढने हैं। ओके फिर एमा के रूम का चेक करना है, रेबेका का रूम का। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम लोगों को सबके रूम चेक करने हैं, तो प्रॉबेबली जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पर ही होंगे, तो हम लोग ऊपर चलते हैं। Hi. Hi there. I received a vote token from Patrick London Bank. Did I understand correctly that I should give it to Rebecca in case of your death? Exactly. She holds the other one. I want her to have the file on Arthur Edwards if I die. We're not fearful she will be in trouble. A copy of the case file. Alexa Carter has stored a copy of the case file on Arthur Edwards in a deposit box in the London branch of the Milton Bank. The deposit box can be accessed by presenting a set of 2 tokens currently held by Alexa's daughter Rebecca and Mr. Fensby the butler. Okay. If she knows. Case file She मुझे will ढूंढनी start पड़ेगी. digging when she realizes things don't add up, inevitably getting her in trouble. I'd rather she knew who she's up against. She's clever and resourceful. Who knows, maybe she'll be able to hit him where it hurts. But I don't want her to get involved prematurely. Hopefully she'll never have to get involved at all. ओके ओके ठीक है केस फाइल भी है वो जो मैं ढूंढनी है. That is the door to Rebecca's room. रेबेका के कमरे में जाने का रास्ता. मैं यहाँ से जा सकता हूँ. ठीक है. ओके सेट है. हाँ ये सही है. जो लॉक डोर्स है ना उनको मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ. ये कुछ ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए. ओके मैं इसके कमरे में आ गया हूँ. आई थिंक शायद वही कमरा है जहाँ पे हम लोगों ने पहले एंट्री मारी थी. हाँ वही है. तो यहाँ पे कोई चीज़ क्या रह गई है जो मुझे ढूंढनी है. तो स्कैन कराने का सीन है. ठीक है. ओह स्कैन का है ऑप्शन यहाँ पर. ठीक है. तो रेबेका का कमरा हमारा कंप्लीट हो गया है. अच्छा बात है एमा और जॉर्जी का रूम. ओके ये कमरा मुझे ढूंढना पड़ेगा. जैकरी का रूम तो मेरा कंप्लीट हो गया है. ये कमरे में हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है. इनका कमरा में भी शायद इस तरफ हो सकता है. क्या सीन चल रहा है. That door leads to Emma and Gregory's room. ओके सेट है. ठीक है. तो यहाँ पे जाने के लिए भी मुझे खिड़की टापनी पड़ेगी शायद. हाँ ये खिड़की यहाँ से टाप के मैं जाता हूँ. ओके तो भाई मैं इन लोग दोनों के कमरे में भी अंदर आ चुका हूँ. अब ज़रा चेक करते हैं यहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ है कि नहीं. ऑलराइट लेट्स सी. ये क्या है. A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? ये तो वॉकिंग क्रेन है. मेरी किसी काम की नहीं लग रही. वो क्या वहाँ पे भी कुछ है. लेटर ओपनर रखा हुआ है. जिस स्कैन करने के लिए कुछ है यहाँ पर. होना तो चाहिए. कोई तो चीज़ होगी यार स्कैन करने के लिए. आई थिंक शायद सब कुछ हो गया है. लेकिन मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे ये क्या है. यहाँ पे कुछ है. Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens.
ओके तो भाई मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, लेकिन मुझे वो लास्ट क्लू नहीं मिल के दे रहा। अब इनके पास क्या लास्ट क्लू है मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, बटलर का ऑफिस। बटलर का ऑफिस तो मुझे कहीं नहीं दिखा। बटलर का ऑफिस शायद मुझे ढूंढना चाहिए। ग्रीन हाउस, ओके। पहले एक काम करते हैं, बटलर का ऑफिस ढूंढते हैं। मे भी ऊपर तो कहीं भी नहीं है, तो नीचे शायद होगा। नीचे चल के शायद देखते हैं। ठीक है, किचन है यहाँ पर। वाह, वहाँ पर तो बहुत सारा सामान रखा हुआ है। No good's gonna come of it. Stick to your own kind. You mean like Chris? He treated me like shit. एक और All he wanted to do was play stupid video games. Never any romance. I deserve romance. रोजी, अबे ये तो वही है ना जिसको बंदा लेके गया था, वही लास्ट ऑफ अस 2 की हेली। I'm in trouble, aren't I? You're giving me a bit of anxiety, sir. I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Like a real princess. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. Okay. So 41 guests will attend the funeral tomorrow. There's still a lot to see to, but we're in good time. मैंने काफी सारी चीजें पूछ ली हैं। Nothing more specific here. That is the door to Mr. Fernsby's office. Oh wow, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? और यूज कर सकता हूँ। Alright. बटलर के ऑफिस। ये किसकी चाबी है? A key unlocks every door in Thornbridge Manor. ओए वाह भाई वाह। मास्टर की इसके पास यहाँ पे, एक बटलर के पास है। वाह। अच्छा और क्या क्या है यहाँ पर? मिस्टर फैंसबरी, ओके। एक और क्लू मुझे मिल गया। ये क्या है? Painkillers. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler, 47? Zachary's diary. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. ठीक है, तो Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? ओके, हम लोग और भी क्लूज ढूंढ सकते हैं, या तो फिर हम लोग जाके उससे बात कर सकते हैं कि भाई हमने काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढ ली हैं। तो मैं एक नज़र और छान मारता हूँ, अगर मुझे कुछ खास मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसके बाद जाता हूँ। Maybe something to scan. Oh yes, the scan. This is a table showing lethal dosages for the poison used to kill Zachary. Something is circled, 47. Female, age 65 to 79, 60 to 64 kilograms. I'd say Madame Carlyle is next in line for a poisoning. You have uncovered enough evidence to tell Madame Carlyle that Emma is the murderer. Quite the detective, 47. I'm impressed. I suggest you go tell Mr. Fernsby. ठीक है, हमारे पास सारा काम हो चुका है। Unless you think there are more secrets to uncover. Okay, still has more. लेकिन यार ऑलमोस्ट सब तो कर लिया मैंने। ये भी हो गया।
कि यार मतलब मैं चाह रहा हूँ कि यार एक और क्लू जो है वो भी मिल जाए ताकि मेरी 100% इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए। आई एम ट्राई टू कैन डू इट, लेकिन मैं करना चाह रहा हूँ बट मे बी नॉट, लेकिन फिर भी मैं एक ट्राई करके देखता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है। ऑलराइट, मुझे मिल गया फाइनल ऑब्जेक्ट क्या था, चूज स्कैन। नाउ आई हैव ऑल ऑफ दीस। अब मैं जाके जो है वो बटलर से बात कर सकता हूँ, तो चलता हूँ बटलर के पास चलते हैं। I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. ओके, वही सीन होने वाला है दादा। हमने फाइनली इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है, हमें पता है किलर कौन है, लेकिन हम जिसको मारने जा रहे हैं हम उससे मिलने वाले हैं। और अब देखो उसको किस तरह से मारते हैं यार। आई एम रियली एक्साइटेड। ये एरिया कौन सा है? यहाँ पे तो मैं पहले कभी नहीं आया। भाई ये तो पीछे पीछे आ रही है मेरी। ओ भाई तू मुझे किसके पास लेके जा रहा है? वो तो मेरे पीछे। ऊपर की सीढ़ियाँ हैं, आई थिंक शायद ये वो जगह है जहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ। फोटोग्राफ्स तो चेक करो। वाह, भाई यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है भाई? हेलो सर। अच्छा ये शायद प्राइवेट क्वार्टर्स हैं उसके। ठीक है, ये मतलब पूरा फ्लोर ही उसका है, मैडम कार्लाइल का है। All right there. This is Madame Carlyle's office. Please step inside. ये वाला। ओए दादा, अब आएगा सीन। ये सीन होने वाला ज़बरदस्त। Alexa Carlyle in the office. अबे वो तो वहाँ से Your भी आ रही। detective skills have gained you access to the Lion's Den, 47. Now, go claim your reward. आ रही है, पीछे से ही आ रही है, मैं देख नहीं सकता। वो आ रही है, आईने से दिख रही है मुझे। आ गई आ गई आ गई। So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat. Please, go ahead. Accuse Emma. Your niece, Emma Carlyle, murdered your brother Zachary. My niece? Emma is not my niece. She's my daughter-in-law. And your niece. Emma is the illegitimate child of your late older brother Montgomery, who you and Zachary killed 46 years ago. That's preposterous. You asked me to find out what happened to Zachary. Would you rather not know? No. No, go on. I found a letter from Emma's mother, Jane, who was the fiancée of your older brother at the time of his death. She witnessed how you and Zachary pushed him off the balcony. She believed you did it to steal the Carlyle empire from her and her unborn child. And she raised Emma to reclaim what she lost, marry your heir Gregory, get revenge, and secure the Carlyle empire for her bloodline generations to come. Emma is the daughter of Montgomery and that local girl, Jane. She is. Well, the girl got it wrong. I didn't steal anything. I did what was necessary to protect the future of the Carlyles. Montgomery wasn't cut out to take over from father. All heart and no balls. Emma used the funeral gathering to speed up her installment as the lady of the house, seizing the opportunity to stage Zachary's suicide. She did her homework, used a poison made from one of Zachary's rare plants, found old floor plans from Thornbridge Manor,
to gain access to his room through a secret passage. That scheming bitch. More than you think. I found proof that she will try to poison you next. Well, I'll have to take care of that. Thank you, Mr. Whitmer. You have not disappointed. I promised you I would reward you generously if you solved the case. So, what do you suggest? Yes, file. I want the file you have on Arthur Edwards. Edwards, the Constant. But how do you... Oh, I see. I expected you might show up. But to kill me, not help me. But I've been wrong on so many things lately, so why not this one? I will give you the file on Edwards. You've earned it. I don't suppose I could convince you to deal with my daughter-in-law now you're here. I would like to see her dead. No? What a shame. I'll have to see to it some other way then. तो केस फाइल यहाँ पे छुपा के रखी हुई। The file you want is in the safe. God, I hope you get Edwards. The file you want is in the safe. Sir. The file you want is in the safe. Good work, 47. God, That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. I need some privacy. Thank you. Okay. What? All right. Mission complete. Well done, 47. Sup? Locate the exit. बालकनी से टपका के टाइट सीन कर दिया मैंने। अबे यार। Can't forget his eyes. Trust He was me. so swollen, it didn't even look like Zachary. Okay. I think this is the way down. अब बस मुझे यहाँ से निकलना है और फिर मेरा मिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कि कोई फंडी की ना लग जाए बस। Alright, I make it outside. ठीक है, बिल्कुल टाइट तरीके से हमने उसको पहुंचा दिया सीधा ऊपर बालकनी से टपका के। केस फाइल हमारे हाथ में आ गई। मिशन हमारा बिल्कुल पूरा कंप्लीट हुआ। इन्वेस्टिगेशन हमने बहुत अच्छी करी। अब बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और डायरेक्ट जाएंगे अपनी बाइक की तरफ। Everywhere. Go, get out! It's the Constantine. Shit! क्या हुआ? वो सीन हुआ है क्या? ओके, अब यहाँ पे क्या है? 47. Don't respond, just listen. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. Olivia कौन है भाई? I wish there had been more time. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? ये तो भाई हमारा दोस्त होता है ना फर्स्ट मिशन वाला। ओए होए। Over here. Cover me.
Walk away! Or what? You gonna take us all on? Don't. Tell the Constant to start running! You think you've won? 47 is out there, and 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I look forward to your call. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left now. Okay, तो next stop हमारा बर्लिन है. So yeah, we have okay, so हम लोगों ने डेथ इन द फैमिली कर लिया. दिस डन. ओके, नेक्स्ट मिशन एपेक्स प्रेडेटर. फिर उसके बाद ये ओके एंड ऑफ एन एरा. कितने मिशन हैं यार? 1 2 3 4 मिशंस रह गए यार सिर्फ. बस छोटा सा गेम है यार ये. तो देखिए, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस. तो यार मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट मिशन करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट टारगेट क्या होता है हमारा. तो आज तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.